Hello students, myself Mushir Ahmed. Now today I am going to teach you another topic in French revolutions. In the previous video we discussed about the causes of French revolutions. Various causes we discussed about the previous video like despotic rule of Louis XVI, price rising, French society, role of philosophers and the middle class. So these are the causes of French revolutions. Now today we will start the outbreak of the revolutions. It means which incident is responsible for outbreak of the revolutions. It means which incident is responsible to start these revolutions. In this video we discuss about these facts. The first point in this outbreak of the revolution, incident leading to revolutions. It means which incident is responsible to outbreak of the revolutions. In the previous video we discussed about the French society. You know that entire French society divided into three states. First state, second state and third state. First state, clergy and royal family member, church. And second state, nobles and other rich members, and third states, peasants. And you also know that according to divine right, first and second states exempted all kind of taxes according to divine right. They have by birth rights. That's why they exempted all kind of taxes, but entire tax burden upon third states. And you also know that 90% populations belongs to peasant, but maximum land owned by church, clergy and royal family member. So that is the causes we discussed in the previous video. Now you also know that France engaged war with other European countries. You also know that France support American War of Independence and also support 13 colonies in Britain. So huge amount of money spent on this occasion by France. So it is important to maintain their expenses, and it's need to impose new kind of taxes. It's a proposal to impose new kind of taxes, but it is essential to call the meeting of States General. Separately we discuss about what is a States General, but in general you understand about that it's a political body. It's a political body just like a parliament. Now Louis XVI had to increase tax. Louis XVI wanted to impose new taxes. The monarch did not have the power to impose taxes. In France, monarch did not have the power to impose tax. Monarch did not have the power to impose taxes. They only recommend impose taxes. They did not have the power to impose new taxes. Now he had to call a meeting of States General. It's a political body of France. He had to call a meeting of States General to pass this proposal. Those are made by Louis XVI. It means monarch did not have power to impose taxes, need to call the meeting of States General. Now what is States General? States General was a political body to which the three states send their representative. It means
States General is just like a political body or just like a parliament. All three states send their representative in this States General. Why? Because of that, it's like a legislative body to make law. Those are implemented on whole France. In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes. In old regime, monarch did not have the power to impose new taxes. Rather, he had to call a meeting, the States General. Rather, he had to call a meeting to the States General to pass the proposals for new taxes. It means they did not have power to impose taxes, but they have a power. He had to call a meeting of States General to pass the proposals for new taxes. They did not have power to impose tax, but they have a power to call a meeting of States General and call him to pass this proposal. Those are made by Louis XVI to fulfill their treasury. Why? Because of that entire treasury empty due to various causes, like France engaged with other European countries in war, and also France helps 13 American colonies in Britain. So in that situations, France treasury empty. So Louis XVI wanted to maintain the regular expenses of court, universities and other expenses. They wants to impose new taxes in France, but they did not have power to impose new taxes, but they have a power to call a meeting of States General, and States General is a political body. In this political body, all three states send their representative. It means monarch did not have power to impose new tax, but they have a power to call a meeting of States General to pass their proposal. However, it was the monarch alone who could decide when to call a meeting of this body. It means monarch alone decide to call a meeting of States General. No concern with these three states. It means they alone decide to call a meeting of States General. Now these are the outbreak of the revolution of French Revolution. What incident is responsible to outbreak of the revolution? So in this video we discuss about the incident. First incident we discuss about that, the meeting of States General. So in this video we understand about that. What is the reason for call a meeting of States General? You understand about that. So now this is the topic, the outbreak of the revolution. आज हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में नेक्स्ट टॉपिक पुटअप कर रहे हैं, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, यानी ये रिवॉल्यूशन कैसे शुरू हुआ, कौन से ऐसे इंसिडेंट यानी घटनाएं थी जिन्होंने इस रिवॉल्यूशन को शुरू करने में मदद की। आप ये जान रहे हैं कि पिछले वीडियो में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेस पर डिस्कशन किया था। हमने ये डिस्कशन किया था कि एक डिस्पोटिक रूलर फ्रांस में था, लुई 16, यानी एक निरंकुश शासक जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं था। हमने उस पर डिस्कशन किया, वो बूर्बो डायनेस्टी से बिलोंग करता था। फिर हमने डिस्कस किया कि प्राइस राइजिंग हुआ, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था बट डिमांड फूड ग्रेन की बढ़ रही थी, तो अल्टीमेटली प्राइस राइज हो गया ब्रिटेन में। क्योंकि फ्रांस कई सालों से यूरोपियन कंट्री के साथ वॉर में इंगेज था, जिससे उसका जो राजकोष है वो खाली हो गया था, ट्रेजरी इम्पटी हो गई थी। इसलिए और जो लुई 16 का जो महल था उसके रख रखाव के लिए भी जो पैसे खर्च होने थे और जो ऑफिसर्स को सैलरी देने के लिए जो पैसे खर्च होने थे, उसके लिए ट्रेजरी में सफिशिएंट
पैसे नहीं थे, इसकी वजह से लुई 16 ने डिसाइड किया कि वो इम्पोज करेगा नया टैक्स। फिर हमने मिडिल क्लास का डिस्कशन किया कि मिडिल क्लास जनरेट होता है जो एक एजुकेटेड क्लास है, जो डिमांड करता है इक्वलिटी की। फिर हमने डिस्कशन किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में फिलोसोफर्स का क्या रोल है। हमने 3 मेजर फिलोसोफर्स को डिस्कशन किया था, मॉन्टेस्क्यू, रूसो और जॉन लॉक। मॉन्टेस्क्यू का हमने डिस्कशन किया, दे रोट ए बुक इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ लॉज, एंड इन हिज बुक he proposed a principle is called separation of power, शक्तियों का पृथक्करण। अगर सारी शक्तियां किसी एक आदमी के हाथ में आ जाएंगी तो डिक्टेटरशिप की कंडीशन जनरेट हो सकती है। इससे बचने के लिए शक्तियों का बंटवारा ज़रूरी है, जो कि आज की डेट में मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं वो सेपरेट होते हैं। भाई लेजिस्लेटिव सेपरेट है, एग्जीक्यूटिव सेपरेट है और जुडिशरी इज अ सेपरेट बॉडी। लेजिस्लेटिव हैव अ वर्क टू make law, and the executive work to implement that law. Those are made by legislative, and judiciary have a power to review the law. Those are made by legislative, and those are implemented by executive. So these ideas come from the separation of power. And we talk about रूसो। हमने रूसो के बारे में पढ़ा। रूसो ने प्रकृति की ओर वापस लौटो, बैक टू नेचर का स्लोगन दिया था। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी रिप्रेजेंटेटिव और पीपल के बीच में। अगर रिप्रेजेंटेटिव उसकी डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते एक्सपेक्टेशन को, तो वो उन्हें हटा सकता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में था। 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, हमने जॉन लॉक की बुक्स का वो किया, जिसमें वो एग्रीमेंट की बात करता है। पीपल टू पीपल एग्रीमेंट होता है, सिविल सोसाइटी फॉर्म होती है, सिविल सोसाइटी और रूलर्स के बीच एग्रीमेंट होता है, जिससे गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो जब टैक्स इम्पोज करना था तो उसके लिए मीटिंग को बुलाया जाना था। स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी, जस्ट लाइक ए पार्लियामेंट ऑफ फ्रांस। तो लुई 16 हैड टू इंक्रीज टैक्सेस, वही टैक्स को बढ़ाना चाहता था। बट उसके पास टैक्स को बढ़ाने का या लगाने का अधिकार नहीं था, डिड नॉट हैव पावर टू इम्पोज टैक्सेस, बट ही हैड टू कॉल ए मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल टू पास प्रपोजल। बट उसके पास ये विशेषाधिकार था अकेले ही, बगैर किसी स्टेट्स जनरल के, यानी बगैर फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट या थर्ड स्टेट के पूछे, वह स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुला सकता था और उनसे उस प्रपोजल को पास करने के लिए कह सकता था। बट वह खुद से टैक्स इंपोज नहीं कर सकता था। बट इसमें उसकी यह फ्रीडम थी कि वह मीटिंग बुला सकता था और स्टेट्स जनरल से उस प्रपोजल को पास करने के लिए कह सकता था। स्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें सारे स्टेट्स जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। सो नाउ दीज आर द outbreak of the revolutions, and today we discuss about the major incident leading to outbreak this revolution। आज हमने इस रेवोल्यूशन को आउटब्रेक यानी शुरुआत किस इंसिडेंट यानी घटनाओं से हुआ उस पर डिस्कशन हमने शुरू किया है।